Okay, so I'm just sharing out the PowerPoint presentation. And just an overview of हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है. Okay, so आपके chapter 1 के अंदर there are 3 main important parts as we discussed in the last class. जो लोग present होंगे उनको पता होगा that एक microscopy है, एक animal and plant cells है, एक ultra structure of plant and animal cells है, and इसके अलावा the ultra structure of plant and animal cell is subdivided into 2 more other parts. Right now हमने book concept को discuss कर लिया था. हमने basic differentiation between microscopes discuss कर ली थी. हमने एक general overview discuss कर लिया था about what is magnification, what is resolution. एक slide को prepare करते हुए light microscope में what 4 things are we going to keep in mind, और हमने process discuss किया कि what is staining, right? Then we watched few videos, and then we discussed about 3 types of microscopes, basically 2 types of microscope, and one type is subdivided into 2 another types. The electron microscopes are divided into the scanning electron microscopes and the transmission electrons microscopes. So ये simplified diagrams हैं of what an AS student should know about a particular microscope. If they are talking about light microscope, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि light microscope की ये चीज़ें क्या होती हैं. Basically these things will help you to gain marks in practical. So ये चीज़ें आपके practical की होती हैं. अगर आपको नहीं पता होगा कि how to move stage, how to move the fine adjustment, how कि उसकी base किधर है, उसकी stage पे हमने कैसे specimen रखना है, तो ये आपके marks deduct करेंगे. और उधर एग्जाम में आपके पास कोई ये चीज़ें बताएगा नहीं. Then आपको पता होना चाहिए about the working of the electron microscopes and the light microscopes. and हमने भी डिस्कस किया था कि ये जो on the right side ये वाली जो पिक्चर है ये आपकी बुक से ही ली गई है, and it's a simplified picture जो आपको बताती है कि किस तरह से आपका एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करता है. Then we discussed about differences between the scanning electron microscopes and the transmission electron microscopes. But the basic difference between both of them is that transmission electron microscopes allows electrons to pass through and you could see inside a cell. And then another difference for the scanning electron microscope is that you get a 3D structure of outside of specimen. Then we discuss the basic differences between the light microscopes and the electron microscope के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parameters के ऊपर हम इनको distinguish कर सकते हैं. 10 parameters के ऊपर हम लोग इनकी differentiation कर सकते हैं कि how are the light microscopes and the electron microscopes different from each other. ठीक है. And then we discussed about कि ये आपके पास पिक्चर्स हैं जो कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हम 3D स्ट्रक्चर आउटसाइड अ सेल देख सकते हैं. तो ये रेड ब्लड सेल है. तो हमें कैसे पता चला था कि इनकी शेप इस तरह की होती है, इनकी बेली जो होती है वो थोड़ी सी इन्वर्टेड होती है. यू कुड सी ये सारे जो सेल्स हैं ये आउटसाइड उनकी पिक्चर है, ये बाहर से बता रहे हैं कि किस तरह से. वाइल और ये भी जो एग्जांपल है फॉर दी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये एक एंट है, उसके अंदर से नजर नहीं आ रहा, उसके बाहर से पता चल रहा है कि उसके बाहर कौन कौन से फीचर्स हैं, कितनी लेग्स हैं. तो ये आप अंडर अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं. वाइल दिस इज अ पिक्चर ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो ये आपको पता चल रहा है कि इनसाइड द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसी पिक्चर प्रोवाइड करते हैं. अब होता क्या है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं एस बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर लिखा तो डायरेक्टली नहीं होता कि जी ये पिक्चर जो है इज टेकन फ्रॉम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट डेफिनेटली जब वो इनसाइड सेल व्यू दिखा रहा है, जब आपने पढ़ा होगा वो लेवल्स में कि कुछ पैलिसेड सेल्स होते हैं आपके प्लांट्स के अंदर, कुछ मेसोफिल सेल्स होते हैं, तो वो उनको कैसे पता चला था साइंटिस्ट को, उनको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप्स के थ्रू पता चला था. एंड ऑब्वियसली लाइट माइक्रोस्कोप्स आपको इनसाइड दी सेल प्रोवाइड करते हैं, बट अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमने पिक्चर बहुत दफ़ा देखी होगी अनियन एपिडर्मल सेल की एक्टिविटी करते हुए अपने ओ लेवल्स में.
Now, in the last class we discussed, हमने discuss किया था about the differences and magnification is now just हम लोग इसको फटाफट से eat out करेंगे. Magnification क्या है? Magnification is the number of times larger an image is. कितने times एक image larger है than the real size of the object. इसका basic formula होता है m equals to I, which is m equals to the observed size of the image and the actual size. Now, up when it is m equals to I, तो I is observed size of the image. That is what you can measure with the ruler. जो observed side होती है image की, वो आप या तो रूलर से मेजर कर सकते हैं. उसकी भी एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे. Just put this information in one side of your mind. And फिर इसके अलावा रूलर आपके माइक्रोस्कोप में भी होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं. A equals to the actual size, that is the real size, for example the size of cell before it was magnified. Now on the extreme right you can see these two ovals. अब इसमें क्या है कि जब आप अपने ऑक्यूलर लेंस में देखते हैं, आपको पता है कि ऑक्यूलर लेंस कहाँ पे है? वो लाइट माइक्रोस्कोप की टॉप पे से, जहाँ से आप अपने स्पेसिमेन को, अपनी इमेज को, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं. अब उस ऑक्यूलर लेंस के अंदर एक इस तरह से स्केल बना हुआ होता है, राइट. अब उस स्केल में आपके पास, जब आप उस स्केल के अंदर अपना सेल की इमेज फिट करते हैं, तो वो आपको बता देता है कि वो 40 से लेके 60 फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर से. तो आपको पता चलेगा कि ये सेल, जो पर्टिकुलर सेल जो हमने मूव आउट करके फिट किया है अपने ऑक्यूलर लेंस के स्केल में, वो 20 सेंटीमीटर का है. तो वो आपकी आई में लग जाएगा. दिस इज व्हाट यू कैन मेजर विद अ रूलर. रूलर के थ्रू मेजर होगा जब आपको वो फोटोग्राफ देंगे इन एग्जाम. एंड ये भी तरीका, आप ये भी रूलर होता है जो आपके ऑक्यूलर लेंस में लगा होता है. इसको भी आप अपने आई की जगह पे फिट करते हैं. नाउ इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि sometimes they will give you the magnification, sometimes they will give you the actual size, and they will say you to find out the observed size of the image. Well, sometimes they can give you the observed size of the image and actual size of the image, and they will say you to calculate its magnification. उसके भी तरीके हैं. जैसे हम ओ लेवल्स फिजिक्स में या ए लेवल्स फिजिक्स में फार्मूला को चेंज करके, अगर फॉर एग्जांपल फार्मूला था P इक्वल्स टू VT, तो हम उसको चेंज करके उनकी डिफरेंट फॉर्म्स करके हम अपनी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते थे. हम VT इक्वल्स टू P कर देते थे. तो उसी तरह से हम M इंटू A कर देंगे, इक्वल्स टू I कर देंगे, तो हमारे पास इसकी ऑब्जर्व्ड साइज ऑफ द इमेज आ जाएगी. तो दो चीज़ें हमेशा गिवन होगी, या तो मैग्निफिकेशन और एक्चुअल साइज गिवन होगा, या एक्चुअल साइज और ऑब्जर्व्ड साइज ऑफ द इमेज गिवन होगा, या फिर ऑब्जर्व साइज ऑफ द इमेज या मैग्निफिकेशन गिवन होगी फॉर यू पीपल टू फाइंड आउट इट्स एक्चुअल साइज. Now, let's see some questions. This is a very common questions I have taken from your A levels की book, which is of Mary Jones. और उसमें बड़े simply इस बात को explain किया हुआ, इस formula को explain किया हुआ. Formula you can see equals to the image size divided by the actual size, right? अब इसमें थोड़ा सा ये different दिया हुआ है, but obviously ये वही formula है जो कि हम पीछे study कर रहे हैं. अब होता क्या है कि देर आर 3-4 टाइप्स या वेज इन विच हम मैग्निफिकेशन को मेजर आउट करते हैं, राइट. तो उसमें क्या होता है कि अभी मैं आप लोगों को आपकी बुक भी शेयर करूंगा और उसमें से बता दूंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली सी के आपका तरीका क्या हो सकता है. 3 वेज वो कौन सा है? सबसे पहला वे इज द कैलकुलेटिंग द मैग्निफिकेशन ऑफ अ फोटोग्राफ और इमेज. ये कैसे होगी? आपको आपके एग्जाम क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन. तो द स्टेप 1 इज मेजर द लेंथ इन millimeters of the cell in the photograph using a ruler. You should find that it is about 60 सेंटीमीटर. अब आप सेल को यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर आउट करेंगे और आपको पता चलेगा कि इट इज 60 मिलीमीटर. देन हमने अपने फार्मूलाज की कैलकुलेशन में मेजर किया था, देखा था कि हाउ आर वी गोइंग टू चेंज मिलीमीटर्स टू दी यूएम, तो अल्ट्रामीटर्स हम इसको कह सकते हैं. तो हम इसको फटाफट से 60 को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू के साथ यूएम के साथ, तो उसको हम चेंज कर लेंगे एंड विल बी गेटिंग टू नो कि उसकी बेसिकली इमेज साइज क्या है.
ठीक है. It is easier if we first convert all measurements to the same units. आपके लिए आसान हो जाएगा. In this case micrometers, sorry, UM. तो हम इसको माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. अब 60 जो यहाँ पे थी वैल्यू 60 mm is converted into 60,000 micrometers which is divided by 80 micrometers. अब 80 micrometers क्या है? 80 micrometers इसकी एक्चुअल साइज है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है. तो देन आप इसको डिवाइड करके यू कैन फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन विच इज इंटू 750 यानी कि x या मल्टीप्लिकेशन का साइन 750 बहुत लिखना जरूरी है बिकॉज इट इज गोइंग टू टेल यू कि ये 750 टाइम्स मैग्निफाइड है. ओके. सो दिस वाज अ बेसिक introduction you can say or a basic concept related to the magnification, right? Now I'm just going to share you the A levels biology book. I hope it's very much visible on your screens. तो यहाँ पे this is the first type, calculating the magnification of a photograph or image. एक ये टाइप होगी कि आपको इस तरह दे दिया जाएगा. अदर टाइप ये होगी कि आपको calculating the magnification from a scale bar, एक scale bar के थ्रू आपको मैग्नीफाई करना पड़ेगा. एंड इसके अलावा एक मैग्निफिकेशन कैसे होगी कि कैलकुलेटिंग द रियल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मैग्निफिकेशन. तो बात वही है कि फॉर्मूलाज को चेंज करके क्वेश्चन का वे चेंज करके वो आपसे उसकी आंसर डिमांड करेगा, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट विल remain the same, which is m equals to ia magnification equals to the observed size over the actual size. Moving back towards the PowerPoint presentation, we have a very short video on the magnification and we'll just see it for a more clearer concept. हम इसको अभी play करके देख लेते हैं what this video has us to for. Okay. And then we'll move towards its exit activity and we'll be closing the very first part of the topic of chapter 1 ka microscope, and then move on towards the animal and plant cells as well as the okay, so sharing the screen, sharing its sound. So इसको हम study करेंगे and we'll be getting to know more कि हम इसको calculate कैसे करते हैं. Okay, hi, so welcome to this video where we're going to have a look at an exam style question on microscopes and specifically magnification. So let's dive straight in. It says a bacterial cell is viewed under a light microscope. Okay, the actual length of the cell is 4 micrometers. Calculate the magnification using the following equation, and that is magnification equals image size over actual size. Right, now what you'll get on an exam paper is an image which probably looks a bit better than this, right? But you may have to measure it yourself with a ruler. In this case, you obviously can't measure the screen with a ruler, and so I've put the measurement in here. Right, and so if you did measure it with a ruler, it came out at 5 centimeters. Now, if you'd like to have a go, please pause the video and have a go at the question. If not, then I'll walk you through it right now. Alright, so magnification, right, I'm just going to call it M, which we're trying to work out, is equal to the image size, which is 5 centimeters, divided by the actual size, which is 4 micrometers, and you might see that written like this. This funny M stands for micro. Now the problem with this is that I can't do it. I can't do that at the moment because centimeters and micrometers are not the same unit. Anytime you use the magnification equation, you have to convert them into the same unit, right? So I could either convert 5 centimeters into micrometers, or I could convert 4 micrometers into centimeters, right? Now I like dealing with whole numbers, and so I'm going to turn 5 centimeters into micrometers. And so the way I do that, first of all, I'm going to remember that 5 centimeters, or 1 centimeter, is equal to 10 millimeters. So I'm going to say that 5 centimeters is the same as 50 millimeters, right? Now, you should be aware that 1 micrometer is 1,000 times smaller than a millimeter, right? So, for every 1 millimeter, there are 1,000 micrometers. So the millimeters, if I times by 1,000, makes micrometers. So that makes 50 times 1,000, 50,000 micrometers. And then boom, now your units
telling you कि अगर 50 सेंटीमीटर था या फिर 50 मिलीमीटर था तो हमने उस 5 सेंटीमीटर था या 5 मिलीमीटर्स था तो हमने उसको 50,000 माइक्रोमीटर्स में चेंज किया है. Are the same. Micrometers, micrometers. And so we just carry out this calculation. 50,000 divided by 4, or you can do that in your head or in a calculator. That is going to be 12,500. Okay? And there are no units. Okay, magnification has no units, hence why these units must be the same. Because when you divide, they boom, boom, cancel out. Right? So 12,500 would be the magnification. It's quite a large magnification. Now, next part. It says, if a microscope with a magnification of 5,000 was used to view the same bacterial cell, what size would the image appear? Alright, now, we're going to be using the same equation, but we want to work out something slightly different. Alright, let's just raise this up so you can see it. What I'm going to say is that this time, M is still equal to, I'm going to say, image size over actual size, right? Because I can't be bothered to write the whole words out. Now, magnification, this time we know, is 5,000. Okay, image size. Now, image size is what we're trying to work out, so I'm going to leave it there. The actual size of Now, in this part, ये वाला जो part है, इसमें ये क्या कर रहा है वो आपको बता रहा है कि if magnification is given तो आपने उसका image size या actual size किस तरह से find out करना है. And what is this? This is the magnified value. और ये magnified value कहाँ से आई है? From the very simple formula, which is m equals to I over a. M equals to the observed size of the image divided by the actual size of the image. the cell is still the actual size that we had previously. We're told that the actual size of the cell is 4 micrometers. So that is 4 micrometers. Okay, this question will again show you the need for correct units. So I'm just going to scroll down like so. And actually, let's just move this over so we have a bit more room. There we go. Now, what I would need to do is rearrange this equation to get I on its own. Now, I is currently being divided by 4, and so I times both sides by 4. Right, times both sides by 4. Well, that's going to cancel the 4 on the bottom of the fraction, which is going to leave me I. And that's going to equal 5,000, which is our magnification, times by our 4 micrometers. Okay, now 5,000 times 4 is going to give me 20,000. Yep, notice that the 4 was 4 micrometers and 5,000 has no units. So it's just a number times by micrometers is going to give us micrometers. Okay, so our cell is going to appear on our paper as 20,000 micrometers. Now I don't like that unit. Just because, you know, we never measure something on a piece of paper in micrometers, right? So I'm going to say, if I want to convert that, that's the same as saying there are 1,000 micrometers in a millimeter. So if I divide by 1,000, that gives me 20 millimeters. Okay, we could leave it like that, or I could say that is the same as saying 2 centimeters. All of those would be correct. Okay, I would say that these ones Here was related to how are you going to solve a simple question or even a question of A levels biology. And what you can see here कि उसने 20,000 micrometers से convert किया है it to 20 millimeters, and then he converted it from 20 millimeters to 2 centimeters. The conversions is very important. UM के अंदर हमेशा whenever you are going to find out magnification of anything in question paper, you are required to find it in UM, which is the micrometers. इसको हम UN नहीं पढ़ते. अब इसको मैं आपके आसानी के लिए I'm just saying it is UM, but it's basically mu M. Okay, moving back towards the slide, we have another video, but I am not going to discuss it now. Well, there is an exit activity, and I will send you this activity. It's
very simple activity. के the first microscope was the light microscope, which was invented in the 1600s and could achieve up to 300 times magnification. Some of the first cells discovered by the light microscopes were the red blood cells and the sperm cells. Electron microscopes were developed in the 1900s. How do electron microscopes differ from the light microscopes in terms of how they work and what they can do? वेरी सिंपल हमने डिस्कस किया कि उसकी वर्किंग कैसी है और वो व्यू कैसे करते हैं, द 3D एंड 2D पार्ट वाला structure. What are two different types of electron microscopes? You know it very well. Fill in the table identifying two advantages and one disadvantages of the two microscopes mentioned in part 1 and part 2. Then you need to discuss two disadvantages, two disadvantages and two advantages of using the electron microscopes and the light microscopes. Then you will be required to calculate the magnification of this fly. Original size उन्होंने आपको दिया हुआ है, which is 6 centimeter. You will convert it to 6 micrometers, and then you will find out the m equals to ia करके you will find out the magnification. A very simple question indeed, which will give you a hands-on experience and hands-on practice. Then there is another exam question. कि फिगर 22 10 ऑब्जेक्टिव लेंस की भी हमने टाइप पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर. इनटू 10 होता है, 10 टाइम्स उसकी मैग्निफिकेशन होती है, 20 टाइम्स होती है, 30 टाइम्स होती है, 40 टाइम्स होती है. सो part of our reticule is shown below this stem. The markings on the reticules are 0.1 millimeters above. अब आप क्या करें, अब आप इसको कैलकुलेट करें. द फर्स्ट पार्ट इज मेजर द विड्थ ऑफ द स्टेम्स बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. अब पॉइंट ए से पॉइंट बी में इसको मेजर करेंगे. देन द अदर पार्ट इज कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. देन यू विल कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इमेज योर वे. ठीक है, and this is all for today. We'll be inshallah meeting on Monday, and I'm signing out for now. Take care everyone. Thank you.